Okay, so let's start now. See, the thing is that in organic chemistry, as I wrote the syllabus in the start, we have three main topic or chapters to study. The first one and the most important or slightly lengthy, I would say, is this third period elements. Third period elements. In organic chemistry is primarily the study of periodic table. The periodic table में we have groups and periods. उसमें जो third period के elements हैं, these are the ones that represent all the 7 periods in the periodic table. तो जो आप पढ़ोगे third period के लिए, it would actually be replicated or used for second period, fourth period, fifth or sixth or seventh period, excluding transition elements. Transition elements की chemistry A2 में, तो AS में आपसे वो S और P block का ही पूछ रहे होते हैं mostly. Now, third period elements में, if you recall atomic structure के chapter में we done this atomic size trend. So as we go across the period, the atomic size decreases, right? So if I'll draw the atoms just like that, so from left to right, the atoms become smaller and smaller. अब अगर इस stage पे कोई ये सोच रहा हो कि how is it possible कि atom जो है वो छोटे हो रहे हैं, proton number तो ज़्यादा हो रहे हैं and all, उसके लिए that person should really revise and study atomic structure chapter number 2. तो उसमें मैंने बताया था आप लोगों को कि as you go across the period, the effective nuclear charge increases, so the atoms become smaller and smaller. So these are the third period elements, starting with sodium, where we have magnesium, aluminum, silicon, phosphorus, sulfur and chlorine, because argon at the end doesn't react, उसको हम normally count नहीं करते इसमें reactivity में. So this is the trend of the atomic size of third period elements from left to right. The first three elements here are metals, and the next are all non-metals. In fact, silicon is a metalloid, like its properties are between metals and non-metals. This is metalloid. इसके notes बेटा आप लोगों ने लेने हैं साथ साथ, ठीक है? क्लास में मैं देखूंगा कि आपने कहाँ पर लिखा है. तो ये नहीं है कि बस आप रिकॉर्डिंग देखते रहे बैठ के या इसी तरह देखिए इसको समझते रहे हेडफोन लगा के या विदाउट एनी प्रॉपर अटेंशन, तो उसका फायदा नहीं है. ये इनऑर्गेनिक से for last 3-4 years examiners are setting some really tricky questions. उसका तरीका क्या होगा वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, बट सबसे पहला स्टेप ये है कि you attend these classes properly and take notes. As I've said, keep them separate from your other like topics and chapters we are doing in face-to-face class. So inorganic में जो लोग अभी आ रहे हैं उनको मैं ऐड जिनको मैंने किया, just go through inorganic में. Our first chapter is third period elements. It's about the study of these elements that I've written on the right hand side, which include sodium, magnesium, aluminum, silicon, phosphorus and chlorine. So first three are metals, silicon is metalloid and phosphorus to chlorine are non-metals. अच्छा, अब हमने इस चैप्टर में पढ़ना क्या है. स्टार्ट में we have some graphs about third period elements. We'll start with those, and then we have reactions of these elements. As I said, inorganic is about reactions of metals and non-metals and all the elements in periodic table. And again, as I said earlier, many of these reactions are from IGCSE O-level syllabus. So बहुत सी नई चीजें भी हैं, no doubt, but it's not a very complicated portion of our chemistry syllabus. इसको हम online में पढ़ सकते हैं. So the first graph actually is the melting point graph of third period elements. अच्छा, अब the thing is कि when you sketch melting point graph, we just draw a general sketch. I mean, we don't plot it on the exact values as such. So it has to be correct in terms of the position of the elements, but कोई इतना accuracy उसमें नहीं हमें चाहिए. 2-3 points मैं point out करूँगा, आपने याद रखने. Y-axis fits the melting point of the third period elements, and X-axis fits the proton number or atomic number. अच्छा, अब ये मैं थोड़ा इनको पहले explain भी कर देता हूँ. Then I'll draw the graph and then I'll write down these points as well. They all come in structured paper.
तो वो आपने समझने हैं और उसके बाद याद रखने हैं। देयर इज अनदर ग्राफ अबाउट थर्ड पीरियड एलिमेंट जो हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में किया था, आयनाइजेशन एनर्जी ग्राफ। तो वो हम इधर नहीं करेंगे रिपीट, वी डन दैट इन डिटेल इन एटॉमिक स्ट्रक्चर, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ग्राफ ऑफ थर्ड पीरियड एलिमेंट्स, तो उसको आपने वहां से रिवाइज करना है। So this is technically second graph of third period, that's melting point. अच्छा, जो first three elements हैं, these are metals, and sodium, magnesium, aluminum are all metals. They have metallic bond, and as the size of metal atom decreases, the metallic bond strength increases because smaller atoms, aluminum has more charge as well. Like aluminum becomes +3 as its electrons are delocalized. Magnesium is +2, sodium is +1. So aluminum atoms are smaller as well as they have more charge. So the strength of metallic bond is more in aluminum. तो सोडियम से जब हम जाएंगे एल्यूमिनियम तक तो melting point would increase. Then comes this silicon, and that's a giant covalent macromolecule. तो उसमें strong covalent bonds हैं, so it will have highest melting point in the third period. Then phosphorus, sulfur, and chlorine are non-metals. They have weak van der Waals forces. तो इनके melting point जो है वो exceptionally कम है compared to metals and silicon. Now if I plot all this, this initial harm shows false origin, मतलब proton number अगर sodium का 11 है, यहाँ से हम start करते हैं 11, 12 and all. So let's say if sodium is here, then magnesium, aluminum तक there'll be an increase with sort of not exceptional gradient, but then silicon would be suddenly very high. तो सिलिकॉन जो है उसको आपने बिल्कुल ऐसे टॉप पे दिखाना है, and then from silicon down to phosphorus, sulfur, chlorine, it will be very low. Sulfur will be slightly higher than phosphorus, and then chlorine, argon again would be quite low. ये शेप आप कॉपी कर लें, एलिमेंट्स भी फिर मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन करके बताता हूँ कि फास्फोरस सल्फर का डिफरेंस क्यों, और लिखूंगा भी इसको. So this is sodium, magnesium, aluminum. Top is this silicon, where we have this phosphorus, sulfur, chlorine, and argon. Try and keep, chlorine lower than phosphorus. Apparently, even I've shown it almost same. तो इसको हम थोड़ा सा नीचे कर देते हैं. So it's like maybe down here, and then argon even lower than that. इसको आप ड्रॉ कर लें, और जो ये पॉइंट्स मैंने थोड़े पहले बोले थे, और इसमें जो एक्सेप्शन है फॉस्फोरस सल्फर की, वो मैं हाईलाइट करके लिख दूंगा कि वाई सल्फर इज लाइक स्लाइटली हायर देन फॉस्फोरस. लेकिन आप मेरे साथ साथ लिखेंगे बिकॉज आई विल बी यूजिंग न्यू स्लाइड आफ्टर दिस. टेक्स a lot of time to raise all this. तो इधर मैं साइड पे ये पॉइंट्स लिखता हूँ, आप कॉपी करें, फिर मैं सारा रिकैप करता हूँ इसको. फॉस्फोरस एंड सल्फर का जो एक्सेप्शन है इसमें, in fact phosphorus molecular formula is P4 and sulfur is S8. And like हम routine में तो we just write P and S, but actually one molecule of phosphorus has 4 atoms in it, and sulfur has 8 atoms in it. They're non-polar and they have TIDP. So sulfur S8 has greater MR. इसके सल्फर का MR 32 होता है, 32 times 8 करेंगे तो काफी ज्यादा mass आएगा. So sulfur S8 has greater MR than phosphorus. Hence, it has stronger intermolecular forces and higher melting point. मतलब आपने याद रखना है कि फास्फोरस और सल्फर में जो एक्सेप्शन है on this side here, it is because sulfur's MR is more than phosphorus. तो हमने जब intermolecular forces पढ़ी थी तो I explained if intermolecular force is same, like both phosphorus sulfur are non-polar and they have TIDP, तो फिर हम देखते हैं कि MR किसका ज़्यादा है, तो उस बेसिस पे हम इसको डिसाइड करते हैं MR के बेसिस पे. तो ये रीज़न लिखेंगे.
उसके बाद सिलिकॉन का अगर आपसे कोई पूछ ले कि व्हाई इट हैज हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट ऑन द ग्राफ, तो सिलिकॉन की रीजन में इधर नीचे लिख दे तो आप कॉपी कर लें। सिलिकॉन इज जाइंट कोवलेंट macromolecule, hence highest melting point। और फिर ये जो सोडियम टू एल्यूमिनियम इंक्रीज हो रहा है, तो उसका जो रीजन मैंने इधर एक्सप्लेन की थी, बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ, वो आप लिखेंगे। आई जस्ट ट्राई एंड पुट इट ऑन दिस साइड, ये नोट करते जाए बेटा। फिर ये explanation में this is first explanation, that's second for silicon, and third for sodium to aluminum। So for these three elements or metals, the melting point increases due to increase in metallic bond strength। So that's the reason for this। So third period element में in the first topic, that's graphs। First graph that we have done is the melting point trend of the third period elements, and actually it's based on the type of intermolecular forces or intramolecular forces an element could have. The first three are metals, so they have metallic bond. The strength of metallic bond increases because as I go from left to right, the atoms become small and the charge increases. So smaller atoms with more charge will have stronger attraction. Silicon is a giant covalent structure. That's why it has highest melting point on the graph. Phosphorus, sulfur में exception है क्योंकि इसमें sulfur का MR phosphorus से ज़्यादा है. That's why it's slightly higher than phosphorus. Chlorine, argon are eventually non-polar and they have weak van der Waals TIDP. इस वजह से इनके बीच में बहुत ही poor intermolecular force है. So lowest melting point. अब इसको आप नोट कर लें. I'll just go on the next slide after this. And if you have a question, you can unmute yourself and then ask a question. बाकी मैंने options जो है ना वो बंद किए हैं for peaceful conduction of class. All right, so let's go to the next graph. That's quite easy one, conductivity graph of third period. So I'll go on the next slide. Now in third period elements, number 2 graph is conductivity of third period elements. You get these graphs in MCQs quite commonly, and the examiner says like which of the following graph correctly represents the conductivity of or melting point of third period element. So you got 4 graphs and you have to pick the right option. Obviously अगर आपको graph sketch करना आता है and you know the shape of the graph, only then you can choose the correct one. Now if I write down the elements again, in third period we have sodium, magnesium, aluminum, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine and argon. So in general, as you studied in science from grade 6, 7 or even earlier perhaps, that metals are conductor and they're good conductor, and non-metals are a very poor conductor. और silicon बीच में metalloid है, semi metal जिसको हम कह सकते हैं. So its conductivity is in between. अब silicon, you know, because of its moderate conductivity is used in all these microchips and everything. तो इस बेसिस पे जब हम सोडियम से एल्यूमिनियम पे जाते हैं तो because the number of delocalized electrons increase, aluminum can give 3 electrons out. Conductivity of aluminum is much higher than sodium or magnesium. फिर सिलिकॉन की in between आ जाएगी. Phosphorus, chlorine, argon are non metals. तो हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वगैरह में ये पढ़ाते हैं स्टूडेंट्स को कि नॉन मेटल्स आर नॉन कंडक्टर. लेकिन एक चीज जो साइंस में हम फॉलो करते हैं, दैट्स अ फैक्ट इवन, कि there is
nothing as an absolute non-conductor. I mean कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसको हम बिल्कुल कह दें कि उसकी conductivity zero है. In fact, everything, including non-metals or noble gases even, will have some delocalized electrons, especially in the solid state. इसका जब ग्राफ आप बनाएंगे तो उसमें आपने कंडक्टिविटी को जीरो नहीं दिखाना, किसी मतलब एक्स एक्सिस पे टच नहीं करना. प्रोटॉन नंबर एक्स एक्सिस पे आ जाएगा, वाई एक्सिस पे इट्स कंडक्टिविटी. एंड एज अगेन वी स्टार्ट सोडियम 11, तो सोडियम से आप एल्युमिनियम तक इंक्रीजिंग दिखाएंगे. And each point here is an element: sodium, magnesium, aluminum, increasing conductivity. And then silicon would fall below metals, but it would be relatively much higher than these non-metals like phosphorus or mercury. तो phosphorus के बाद आगे आप इसको बिल्कुल एक्सेस के पास ले आएंगे, and with a very gentle slope we would just show it along the axis. अब जनाब इसमें ये हमारे पास सिलिकॉन के बाद फास्फोरस, सल्फर, chlorine and argon, very low but not touching the x-axis. So that's silicon here, phosphorus, sulfur, chlorine and argon. So that's the sort of trend for the connectivity of third pair elements, like sodium to aluminum increasing because of increase in number of delocalized electrons. Conductivity बढ़ेगी. Silicon is a semi-metal, so has some delocalized electrons. And phosphorus से argon, ये जो सारे हैं, they are very poor conductor, extremely poor conductor, and have very few delocalized electrons again. Free electron कोई term नहीं होती chemistry में. अब जब कहते हैं कि this is a conductor because it has free electron, तो free electron is no term, actual term is delocalized electron. So metals में there is a very large number of delocalized electrons, hence they are very good conductor. Silicon has some delocalized electron, and these non-metals in solid state have very few delocalized electron. That's why their conductivity is so low. I mean, maybe non-metals को अगर आप current pass करें तो the conductivity is so low कि if you touch the non-metal, so you might not feel any current as such, but a very sensitive kind of meter, ammeter can detect कि कितना करंट पास हो रहा है. तो ये आसान सा ग्राफ है. आप देखें इसमें कोई ऐसी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं हम पढ़ रहे इनऑर्गेनिक में. इसके आगे वैसे रिएक्शंस आ जाएंगे, दे आर मच इजियर. जैसे हम लोग आगे पहले से पहले एनर्जेटिक्स या इक्विलिब्रियम में पढ़ रहे थे. इसको भी आप कॉपी कर लें एंड देन आई विल मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड. दैट्स द लास्ट ग्राफ एक्चुअली. थर्ड ग्राफ इसका आई रिपीट is ionization energy graph of third period, and we done that in inorganic chemistry, sorry, atomic structure chapter earlier. आप इसको नोट कर लें, मैं जरा एक बार अटेंडेंस भी देख लूं. All right, now let's start with the reactions of third period. तो उसके लिए again I'll go to the next slide. Takes a lot of time to erase all this. Now for the reactions of third period elements, reactions of third period elements. So इसमें भी as I said earlier, there will be many reactions that you'll see would be like the ones from IGCSE or O level, but then there will be many new reactions. In organic chemistry में balancing of equation is must, otherwise equation balancing is must.
देयर आर वेरी फ्यू इक्वेशन जहाँ पर आपको बैलेंसिंग नहीं करनी होती, तो वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो ये क्वेश्चन पूछना या सोचना कि जी बैलेंसिंग करनी है कि नहीं, ये क्वेश्चन ही नहीं है बेसिकली केमिस्ट्री में। एवरी इक्वेशन हैज टू बी बैलेंस्ड। In fact, at the start of your paper, it writes wherever needed, write balanced equations. But then there'll be some reactions which have some observation, like what do you see during this reaction? Some color change, some precipitate, or something else. तो वो जहाँ जहाँ मैं लिखूंगा नोट्स में, जो सिलेबस में है, वो आपने याद रखने। If I don't write an observation for a reaction, that means that is not in the syllabus as such. In fact, every reaction has some observation, right? But हमारे syllabus में जो required है, बस उतनी लिखेंगे। So if I list down the elements again of third period: sodium, magnesium, aluminum, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine, argon को हम reactivity में नहीं discuss करेंगे, तो I'll not write it here. Each element here is from a separate group. So as for the reactions, first one is with oxygen. I mean, when you react these elements with oxygen, or air भी लिखा होगा, air में oxygen ही react करती है, nitrogen is very stable. इसमें क्या होगा, when you react these elements with oxygen, they all make oxides, and some of these react with oxygen at room temperature, some need heat. So जहाँ heat required होगी, I'll write it on the arrow, and if I don't write it, it means that reaction happens at room temperature. In fact, इन सब के रिएक्शन हम हीट पे करते हैं, फ्लेम में करते हैं एक्चुअली। आई मीन यू गॉट अ बंसन बर्नर एंड उसका जो फ्लेम है उसमें ला के पाउडर स्पैचुला पे डाल के हम पाउडर एलिमेंट उस पे ऑक्सीजन एक्सपोज करते हैं एयर से उसके साथ, तो दैट्स हाउ द रिएक्शन टेक्स प्लेस। और यू माइट सिंपली टेक एन एवापोरेटिंग डिश और डाल के उसमें पाउडर, तो उसको इस तरह बर्नर पे हीट कर देंगे। सो दैट्स हाउ वी कैरी आउट दीज रिएक्शंस। So when sodium is reacted with oxygen, it will make an oxide, that's Na2O. अब इक्वेशन को हमें बैलेंस भी रखना है, तो as I put 2 with Na to balance oxygen, that makes sodium 4. इधर 4 लगा दूंगा मैं। स्टेट सिंबल्स भी आपको आने चाहिए, लेकिन जब आपसे एग्जामिनर पूछेगा स्टेट सिंबल, आपने तभी लिखना है, ठीक है। डोंट राइट स्टेट सिंबल्स अनलेस आस्क्ड, बिकॉज if you write them wrong, तो you might lose marks. Balancing तो must है, but state symbols when asked. आप देखें स्टेट सिंबल इस स्टेज पे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप लोगों को पता हो बहुत सारे, मेजॉरिटी इनफैक्ट, लाइक मेटल्स आर सॉलिड, नॉन मेटल्स में सिलिकॉन इज सॉलिड, फास्फोरस इज सॉलिड, सल्फर इज सॉलिड, बट क्लोरीन इज अ गैस। तो ये सारे सॉलिड हैं सल्फर तक। तो इनकी स्टेट अगर मुझे लगानी है, तो सोडियम सॉलिड, ऑक्सीजन गैस, and sodium oxide, any compound which gets a metal in it, it will be solid unless there is some water present, or if it is soluble in water. ये बात आगे चल के आपको पता चल जाएगी। इन रिएक्शंस में वाटर कहीं भी नहीं है, तो हम एक्वस कहीं भी नहीं लिख सकते। So next reaction is magnesium plus oxygen. Again flame is throughout, जो मैंने भी बताया कि we carry out these reactions in flame or spark. Magnesium solid, oxygen gas will make magnesium oxide. ये साथ साथ लिखते भी जाए बड़े, कोई इतनी मुश्किल चीजें नहीं है। एज यू कुड सी कि ये रिएक्शंस आप लोगों ने पढ़े, इनफैक्ट मैग्नीशियम की तो ऑब्जर्वेशन भी आपने पढ़ी हुई है। सो एज वी बर्न मैग्नीशियम इन फ्लेम, वी सी वाइट और डेजलिंग वाइट फ्लेम। तो इसकी ऑब्जर्वेशन सिलेबस में है, वो मैंने इधर लिख दी है, इसको नोट कर लेंगे। सर मैग्नीशियम के 2 मोल्स है ना? हाँ, to balance magnesium we'll put 2 and 2 with reactant and product. Aluminum will form aluminum oxide, that's Al2O3, and again to balance it out, to balance oxygen we'll put 2 here, that makes it 6 aluminum 4 to the 4. ये इक्वेशंस आप लोगों ने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ there is an issue, और वो इशू ये है कि even as teachers we say that it's easy, and it is easy, no doubt. So when students see these equations and reactions, they say यार ये तो बड़ा आसान है, ऑक्साइड बनाना है, ये करना है, वो करना है, but once they don't practice it enough, so examiners, as I said earlier, are setting quite tricky questions for last 4 or 5 years from inorganic.
इसको बेस्ट पढ़ने का, ग्रिप करने का मेथड ये है कि आप पहले तो क्लास समझें, ध्यान से पढ़ें, फिर इफ आई शेयर रिकॉर्डिंग तो उसको देखें दोबारा, और देन मेमोराइज ऑल दीज इक्वेशंस, आई मीन याद करें इनको बाय हार्ट, और याद करके टेक आउट अ रफ नोटबुक एंड राइट डाउन योर इक्वेशंस विदाउट लुकिंग इनटू नोटबुक्स। मतलब आपने उसको रीराइट करना है 2-3 दफा, खुद से सोच के कि किसका रिएक्शन होता है, किसका नहीं होगा, ऑब्जर्वेशन क्या है. So if you do it there and then, I mean, on the same day, if you revise it and write down these equations at least 2 times, तो ये फिर आपको याद हो जाएंगे. And then any sort of questions asked, if you're confident about equations, so you'll be able to answer it. But if you're not able to write the equation easily and balance the product and reactants, तो फिर क्वेश्चन की डिफिकल्टी तो बाद में आती है. ये तो पहला स्टेप है. इनऑर्गेनिक को बच्चे बाद में कहते हैं सर इनऑर्गेनिक नहीं हो रही है. इसका सोल्यूशन टीचर के पास नहीं है, मैंने तो आपको मेथड बताना है ना, आपने फॉलो करना है. If you memorize these equations and if you write them in the rough notebooks couple of times, तो you'll actually enjoy inorganic chemistry. Otherwise आपसे ये इसके questions नहीं होंगे. अच्छा, अब एल्यूमिनियम के बाद नेक्स्ट इज सिलिकॉन. सिलिकॉन reacts with oxygen on heating again, and that makes silicon dioxide, SiO2. In fact, जब आप फेस टू फेस क्लास में आएंगे तो I might be asking these equations and you might have to write them on the notebook or on the whiteboard maybe. तो ये आप सब लोग याद करके आए हैं नेक्स्ट क्लास तक. Phosphorus reacts with oxygen to make phosphorus oxide. So there are multiple oxides of phosphorus. You can actually write P2O5 or P4O10 preferably. तो P2O5 अगर मैंने लिखा तो to balance it out I'll put 2, 4, 5 with this, and solid phosphorus oxygen gas phosphorus oxide solid. And again heat या flame लिख दें, जो भी लिखना है आपने यहाँ पर, रूम टेम्परेचर पे नहीं होगा. Sulfur then reacts with oxygen to make sulfur dioxide, and this would take sulfur solid, oxygen gas, sulfur dioxide gas. The sulfur itself is a yellow solid powder. This is yellow. SO2 is a colorless gas. It is colorless and pungent. Pungent as in you can't sniff or smell it. लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड का अपना कोई कलर नहीं है, ठीक है. Do not confuse color of sulfur with the gas oxide of sulfur. That is colorless. And if we give a flame to this reaction, the flame color is blue. अब देखें इस रिएक्शन में काफी ऑब्जर्वेशन है, तो मैंने सारी लिख दी इधर. Sulfur is a yellow solid. It burns in a blue flame and it gives a colorless pungent smelling gas. तो जो ऑब्जर्वेशन इसमें एग्जामिनर आपसे पूछे आपने वो लिख देनी है. Typically they ask you the flame color. तो sulfur when burned in flame give us a blue flame. तो अगर मैंने स्पैचुला पे सल्फर डाला हुआ है, इस तरह से इसको अगर मैं हीट कर दूं तो वो ब्लू फ्लेम नजर आएगा मुझे सारा. तो ये ऑब्जर्वेशन है, इक्वेशन है. क्लोरीन का रिएक्शन ऑक्सीजन से होता है, बट ऐसा हमारे सिलेबस में नहीं है. स्टिल राइट इट, क्योंकि एक आध पेपर में एग्जामिनर ने पूछा है ये रिएक्शन, और बट उसमें आपको प्रोडक्ट का फॉर्मूला बताया हुआ है. सो it will happen about inorganic chemistry that some things are not in syllabus, but then they make a question on it, and then अगर आपने ये चीज तो याद रख ली कि सर ने कहा था ये सिलेबस में नहीं है, और पेपर में वो नजर आ जाए और आपका ब्लड प्रेशर लो हो जाए तो उसका फायदा नहीं है. आपने क्वेश्चन पढ़ना, सब उसके अंदर ही लिखा होगा. So for such things which are not in syllabus and I still explain it, you can actually put this steric sign and circle around it. So not in syllabus or CIs, but asked in questions. अब ये नहीं मुझसे पूछना कि ये क्यों होता है कि जी सिलेबस में नहीं है, फिर भी पूछते हैं क्योंकि एग्जामिनर आपको सिचुएशन दे देता है ना, बता देता सारा कुछ कि जी क्लोरीन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू मेक एन ऑक्साइड विद 2 क्लोरीन एटम्स. पीछे क्या रह गया, फिर रिएक्शन कराना है. So Cl2 plus O2, that will make an oxide of chlorine Cl2O.
In fact, this is also gas. तो अब आप इसको याद ही कर लें तो अच्छी बात है, मतलब इसमें मुश्किल तो कुछ नहीं है. So to balance it out, we'll put 2 here and 2 with chlorine as well. So this reaction, apparently you won't be asked to construct an equation of chlorine and oxygen, but अगर आ जाए तो product का formula या कोई hint होगा उसको use करें, और अगर याद है पहले से तो बस ये लिख दें. वैसे there are multiple oxides of chlorine, लेकिन this is the most stable one. तो ये हमारा फर्स्ट रिएक्शन है थर्ड पीरियड एलिमेंट का विद ऑक्सीजन और एयर. जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो मैं अभी स्टार्ट नहीं करूँगा, सब लोग क्लास में नहीं है. थोड़ा अगर मोटिवेशन करेंगे तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास जो हमारी अगेन सैटरडे 11 o'clock प्लान है उस पर आई होप कि अटेंडेंस विल बी मच बेटर. इसमें अगर किसी का क्वेश्चन है जो आज मैंने पढ़ाया वो पूछ सकते हैं आप. एंड इनऑर्गेनिक में द फर्स्ट चैप्टर इज थर्ड पीरियड एलिमेंट्स. We started with graph of third period elements. Graphs में we done the melting point graph, फिर we done this conductivity graph, और फिर अब हमने reaction start किए with oxygen. Then we have reaction with water and reaction with chlorine gas. फिर इनके oxides हैं और chloride. तो total 2 और topic हैं technically. उससे ये chapter खत्म हो जाएगा. उसके बाद जो next 2 chapters हैं inorganic के वो और भी छोटे हैं. तो it's not that lengthy, but naturally because yes chemistry syllabus is much bigger, तो ये इनऑर्गेनिक हमें ऑनलाइन साथ साथ चलानी पड़ेगी ताकि जरा कंफर्टेबल खत्म हो जाए सिलेबस. अब बेटा किसी को डाउट है क्वेश्चन है पूछ लें प्लीज. Sir, is P2O10 a solid? जी प्लीज. Is P2O10 a solid? HPO10 के A फर्स्ट वर्ड solid. The state symbols. P2O5. बेटा आप मुझे तो पहला पार्ट वर्ड समझ नहीं आ रहा, आप H कह रही हो कि फास्फोरस कह रही हो? Sir, P2O10. P2O10 एग्जिस्ट ही नहीं करता बेटा, P4O10 होता है. P4O10 Okay. is a dimer of this. तो ये सॉलिड है, ये भी सॉलिड है. P4O10 is solid. You can write that also. Anyone else with a question, please? Else I'll just stop it here then. सर ये क्लोरीन गैस की कौन सी फ्लेम होती है? We don't have that in syllabus, so I won't write that. Chlorine itself is a yellow gas, and it doesn't give a specific flame. In fact, the gas burnt with oxygen, or in fact, we don't need any flame for this reaction. Chlorine, oxygen are extremely reactive, so we get this reaction quite easily at room temperature. But product is colorless. तो ग्रीन फ्यूम्स फेड, बस यही ऑब्जर्वेशन होगी इसमें, लेकिन वो आपसे रिक्वायर्ड नहीं, वो मैंने लिखी भी नहीं. Sir, do you have the previous slide saved? मैं बेटा इसकी रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा तो उसमें से फिर आप देख लेना उसको. Okay. ठीक है जी, चलें, दैट वुड बी ऑल देन. अल्लाह हाफिज़. Allah Hafiz.